हाय बच्चा पार्टी वेलकम बैक टू द स्टडी 10 चैनल। आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ेंगे। और ये चैप्टर थ्री वीडियोस में होगा, थ्री पार्ट में डिवाइडेड होगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आपने नाइन्थ क्लास में द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें बॉबन डायनास्टी ruled France. Louis the 16th ruled France. And at the end of the chapter, you have seen that Napoleon Bonaparte ruled France and France became republic nation. So we will continue the story of Napoleon Bonaparte in this chapter, in this class of the first history chapter. So before starting, I want to give a suggestion that just rememorize the history chapters like a story. Connect the stories. Then you will be able to remember easily. Okay, so let's start our chapter. The chapter begins with this print. This print was made by Frederick Sorio in 1848. Frederick Sorio had made four prints, in which one of the print is given in your book. So we will just see what is appearing. Okay, these in the upside in the sky, we are able to see the angels, which are like giving blessings to the people who are marching from the Statue of Liberty. This is Statue of Liberty, and they are holding their flags. And in the on the land, we are able to see the broken remains of the monarch, absolutist monarch. यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा की छड़ी है और राजा की दरबार में जो भी होता है वो सारे ब्रोकन है यहाँ पर. So the Statue of Liberty, she holds torch of enlightenment on one hand and the charter of rights of men on the other hand, means right or to vote, like that. Okay, now let's see what is the print depicting. Now here we could see the flags. These flags are like of Germany, Italy, France, like these flags are resembling them. And here we could see Switzerland, USA, and that's all. These in 1848, which we see today as nation states, in 1848, at that time, they are not the nation states. We could see Germany, Italy, France as their nation states, but in that time, they were not. Means the Frederick Sorio has visualized that these states could be nation states in the future, and he had made the print like this, and this is called utopian. Utopian is known as this. Okay, in 1848, Frederick Sorio, and this print, the collectiveness of four prints, we are saying the name democratic and social republics. Democratic and social republics. Okay. See, I have told you France, Germany, Italy were not nation states at that time. Only the Switzerland, United States were. And they have passed the Statue of Liberty because they were already the nation states. Okay. So here some hard words have been key. I have already told you utopian means what, and here absolutist. I have told you absolutist remains are broken here. So let's see what is the meaning of absolutist. Here absolutist means literally a government or system of rule that has no restraints on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized and militarized and repressive. So this is known as absolutist. Let me explain in simple way. एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि
जब राजा अपनी ही मनमानी चलाए, मतलब डिक्टेटरशिप में देखते हैं, मोनार्की में देखते हैं, वो राजा सिर्फ सेल्फ डिसीजन लेते हैं, वो ना ही पीपल की डिसीजन नहीं लेते हैं। यही कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूटिस्ट। नेक्स्ट, plebiscite. Here, plebiscite means it is a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. Means एक प्रपोजल रख दिया जाता है, फिर इसके बाद वोट देने में देने के लिए कहते हैं, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं वो प्रपोजल को और रिजेक्ट भी। सो दिस इज नोन एज plebiscite. Let's move ahead. In the further chapter, we are going to see these absolute state, modern state, nation states. And you may think that these three are same, but these are not. So let's understand the meaning of these three. Because in the further chapter, you are going to hear these words and you will be confused. So let's just understand it now only. Absolute state means rule of the supreme power, that is king. And which form of government follows it? Monarchy, dictatorship. It has no common struggle or past. In modern state, it takes suggestions of whom? People. यहाँ पर राजा होता है, राजा प्रजा की मतलब पीपल की सजेशंस लेता है और वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। और यहाँ पर ये ही लोग, द मॉडर्न स्टेट पीपल आर क्रिएटिंग द कॉमन स्ट्रगल, दे आर क्रिएटिंग द कॉमन स्ट्रगल, देयर पास्ट, their history, their unification. So they are creating. This is modern state. And nation state, this is the rule of people, which we see today. Our India is also an example. We in that time, 1848, they were not nation state, but here they are. तो आपको लगेगा कि ये एक अचानक में हो गया नेशन स्टेट्स, नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, बहुत सारी जनता लड़ाई लड़ी थी, बहुत साल, तब बनी हमारी नेशन स्टेट। एब्सोल्यूट स्टेट से नेशन स्टेट बनी और इस पीरियड को हम कहते हैं मॉडर्न स्टेट। हाँ, यहाँ पर नेशन स्टेट में जितने भी फीचर्स है वो मॉडर्न स्टेट में तो नहीं है, पर मॉडर्न स्टेट में कुछ कुछ है, सारे तो नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी। नेशन स्टेट मीन्स हैविंग ए commonness, oneness, unification, their common past, their struggle, they are having in the nation state. Okay, now let's move ahead. The first topic we have came the French Revolution and the idea of the nation. So, the French Revolution and the idea of nation. Here, some questions are there. I will be also telling you the questions in between the chapter, 2 marks, 1 mark, 5 marks. Previous year questions also I am going to tell you. So let's start. Here the first question comes. I have put a slide here. The points which are there in this slide, they all can be asking one question, and that is, what were the steps taken by people of France for creating a sense of collective identity? From here, the answer begins. If 5 marks question comes, then you may write 5 points, and 3 marks 3 points. इससे ज्यादा नहीं आएगा, 2 marks में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ओके, सो इन 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, 9th क्लास में आपने पढ़ ही लिया है। यहाँ पर द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस दैट केम इन द wake of the French Revolution to the transfer of sovereignty. Sovereignty means power from monarchy to body of French citizens, means people. Okay, it's true also the French revolutionists introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French
people. So this answer will be coming. The idea of la patrie. La patrie means the fatherland. जितने भी फ्रेंच में पीपल रहते हैं, उनको फ्रांस फादरलैंड है, और जो सिटीजन्स है वो सिटीजन्स है. ले सिटोइन मीन्स सिटीजन्स. Emphasis the notion. Notion means idea of a united community enjoying equal rights under constitution. न्यू फ्रेंच फ्लैग भी क्रिएट हुआ था, ट्राई कलर, ये सारे रिप्लेस भी किए थे. Estates General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. And new hymns were composed, oaths taken, martyrs commemorated, all in the name of the nation. And centralized administrative system भी बना था, और regional dialects were discouraged. और फ्रांस में जो लैंग्वेज बहुत ज्यादा बोली जाती है वो है कॉमन लैंग्वेज. इट इज फ्रेंच. It was taken as common language of the nation. It was spoken and also written. Afterwards, Napoleon Bonaparte ruled France. हुआ ना कनेक्ट? 9th क्लास के एंड ऑफ द चैप्टर से यहां शुरू हुआ. सो उसे कनेक्ट करते जाना है और एक स्टोरी जैसा हमारे माइंड में फीड हो जाएगा, तब हम इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं. So here another question comes. Why the people living in Napoleon region had mixed reactions? यहाँ पर नेपोलियन जो बोनापार्टे जो है वो फ्रांस को रूल करता था, और जो नेपोलियन रीजन में पीपल रहते थे उनको मिक्स्ड रिएक्शंस क्यों है? मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस मींस अच्छे भी रिएक्शंस थे, फिर इसके बाद बुरे भी बन गए. क्यों? ये हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेपोलियन ने जो भी अच्छी वर्क्स की है वो हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद उसकी बुराई कर देंगे थोड़ा. ओके. नेपोलियन has created Civil Code of 1804, which is also known as Napoleonic Code of 1804. This code was made in 1804. Okay. What this code tells, let's see. It removed all privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. And Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. यहाँ पर थोड़े से हार्ड वर्ड्स आ गए. Let's discuss it. Feudal system, serfdom, manorial dues. What are these? Let's see. फ्यूडल सिस्टम का मतलब विलेजेस में आप लोग देखते हैं कि ये लैंड है और लैंडलेस लेबरर्स यहाँ काम करते हैं, और लैंडलेस लेबरर्स यहाँ काम करते हैं. लैंड ओनर्स को लैंडलेस लेबरर्स मनी देना पड़ता था. वही काम करते हैं और उल्टा उन्हीं को मनी देना पड़ता था. इसे कहते हैं रेंट कैंपेन. फिर ये इसको अबॉलिश कर दिया नेपोलियन ने, ये कि ऐसा नहीं होगा, इसे अबॉलिश कर दिया. और पीजेंट्स को सर्वडम एंड मेनोरियल यूज, यहाँ पर मनी देते हैं, रेंट कैंपेन ऐसे, उसको मेनोरियल और सर्वडम ड्यूज कहते हैं, वो भी पीजेंट्स को फ्री कर दिया. In the towns too, guild restrictions were removed. Another hard word, guild restrictions means what? Let's see. टाउन्स में एक ग्रुप होता है, उस टाउन में ही एक ग्रुप होता है. यही इसमें बाहर से कोई भी कुछ सामान के लिए आता है तो यही जो ग्रुप है वही देती है, और अगर दूसरी ग्रुप आ गई तो उन्हें पहले से जो भी ग्रुप है वो हटा देती थी. तो इसे कहते हैं गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस. ये रिमूव कर दिया. Transport and communication systems were improved and number of currencies were reduced from 32 to 2. फ्रांस में बहुत करेंसीज होते हैं 32, और एक एक स्टेट में जाने से करेंसी बदलता है तो टैक्स भी लगता है, तो बहुत ही मनी खर्च हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है. ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए नेपोलियन ने इसे करेंसी को 2 में ही कन्वर्ट कर दिया. तो ये थे
नेपोलियन के अच्छे काम। अब हम बुरे काम देख लेते हैं। Here another point is there. In many places, the army of Napoleon were welcomed as harbingers of freedom. Harbingers of freedom means what? The question may be asked. Here one more question may be asked. Why were Napoleon army, the army of Napoleon, were welcomed as harbingers of freedom? And also like this, who were known as harbingers of freedom? ऐसे भी आ सकता है। हार्बिंजर्स ऑफ फ्रीडम नेपोलियन की आर्मी को कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले अच्छे काम करने करने पर पीपल जो है वो जिस भी राज्य में जाते हैं नेपोलियन की आर्मी वहां जीत ही होती है और उनको फ्रीडम मिलती है, तो इसलिए वहां के पीपल जो है वो अगर नेपोलियन की आर्मी आ गई तो उन्हें कहते हैं कि हार्बिंजर्स ऑफ फ्रीडम, मतलब सक्सेस, विक्ट्री, ट्रायम्फ आ जाएगा, ऐसे उन्हें harbingers of freedom कहते हैं। Let's see some bad works which are done by Napoleon. Increased taxation, censorship, democracy destroyed, forced conscription into French armies. These all are hard words. Let me explain it in the easiest method. Increased taxation, जो टैक्स लगता था उसे इंक्रीज कर दिया और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिससे नेपोलियन बना था उसी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और सेंसरशिप, आजकल हम मीडिया को देखते हैं, मीडिया फ्री रहती है, मतलब हेसिटेट नहीं करती कि गवर्नमेंट ने कुछ किया और उसे वो डालने चाहते हैं, उसने डाल दी, उसे घबराहट नहीं हुई, कुछ भी नहीं। तो ये है फ्रीडम। पर सेंसरशिप मतलब ये डालने से पहले उनको सोचना है और वो नहीं डाल सकते कोई भी बुरी चीज गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर डाल दी गवर्नमेंट उन्हें मार पीटेगी। ये है सेंसरशिप। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज। फोर्स कंस्क्रिप्शन मीन्स विलेजेस में जो भी पीपल रहते हैं उन्हें फ्रेंच नेपोलियन ने उन्हें आर्मी में ज्वाइन करने के लिए बहुत ही मजबूर कर दिया, फोर्स किया। उन्हें इच्छा नहीं है, उन्हें विश नहीं है, फिर भी उन्हें कर दिया फोर्स, तो वो हो गए। ये है हमारे बैड वर्क्स, नेपोलियन के बैड वर्क्स। ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है ईच, मतलब गुड वर्क्स 3 मार्क्स, बैड वर्क्स 3 मार्क्स, पूरा 5 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन। Okay, let's move ahead. The second topic, the making of nationalism in Europe. Nationalism. What is the meaning of nationalism? Nationalism means देशभक्ति की भावना यूरोप में कैसी आई? कॉमननेस होगा तभी तो आएगा, तो कॉमननेस क्रिएट हुआ मतलब, तो देखते हैं चलो। So here in mid 18th century in Europe there were no nation states. There were no nation states. I have already told you. And they were like a patchwork. They were not having any commonness. Different states, different spoken languages, people live in the one patchwork. So in middle 18th century, it was like that. In Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies, within the territories of which lived diverse people. हैब्सबर्ग एम्पायर, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हैब्सबर्ग एम्पायर है, ये हैब्सबर्ग एम्पायर है, इसमें ऑस्ट्रिया होती है और हंगरी होती है, और यहाँ पर इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स आल्सो। एल्पाइन रीजन्स टिरल, ऑस्ट्रिया, सुडेनटेनलैंड, बोहेमिया, और यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी मीन्स रिच पीपल। रिच पीपल जो है वो जर्मन लैंग्वेज स्पीक करते हैं, फिर इटालियन स्पीकिंग भी होते हैं। इसी हैब्सबर्ग एम्पायर में, एक ही एम्पायर में जर्मन स्पीकिंग लोग भी है, इटालियन स्पीकिंग लोग भी हैं, यहाँ पर मैगियर स्पीकिंग लोग भी है, अदर डायलेक्ट्स, अदर लैंग्वेजेस स्पोकन भी लोग हैं, और पॉलिश भी। देख, एक बहुत सारे लैंग्वेज स्पोकन पीपल एक ही पैचवर्क में रहते हैं, हैब्सबर्ग पैचवर्क में रहते हैं। सो
Such differences did not easily promote a sense of political unity. Let's move to the next topic, the aristocracy and the middle class. Aristocracy मैंने अभी बताया, rich people और middle class. Let's see. So here मैंने आपको 3 divisions में कर दिया इजी बनाने के लिए. एरिस्टोक्रेसी एक, मिडिल क्लास जनता, पीजेंट्री. So first we will discuss aristocracy. Aristocracy is the dominant class. मतलब जिसके पास बहुत पैसा होता है तो वही तो डोमिनेट करेंगे पुअर पीपल को, मिडिल क्लास पीपल को, इसलिए वो डोमिनेंट क्लास है. और वो माइनॉरिटी भी है, वो मेजॉरिटी नहीं है. मेजॉरिटी तो पीजेंट्स है, minority class है. ये they owned estates in the countryside and townhouses. They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. Their families were connected by marriages. This is common in any rich family, right? Let's see peasantry. Peasantry, this is a majority of the population, of which it is made up of peasants. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners. मतलब peasants रहते हैं majority में, aristocracy minority है और वो dominant है. मिडिल क्लास की कथा सुनते हैं. मिडिल क्लास, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हुआ था तब मिडिल क्लास की जनता ऊपर आई. इट ग्रीव अप. Okay, in the second half of the 18th century in Europe, industrialization came. And in France and other parts of Germany, it came in 19th century. न्यू सोशल ग्रुप्स बने थे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो काम करेंगे उन्हें इंडस्ट्रियल वर्कर्स कहेंगे और इंडस्ट्रियल वर्कर्स होती है वर्किंग क्लास पॉपुलेशन. मतलब मिडिल क्लास जनता जो है वो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है. और एक बात सुन लो, मिडिल क्लास पॉपुलेशन, यही मिडिल क्लास पॉपुलेशन आगे बनेगी रिवॉल्यूशनरीज. दिस वुड बी रिवॉल्यूशनरीज. So please remember it. This can be one mark question, that who were the revolutionaries? Who were working people? Who were middle class जनता? से पूछा जा सकता है. Okay, this is one mark question. आप नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर्स. Okay, next, the question second, what is liberalism? What is stated in different aspects. So let's see what is liberalism. Liberalism derived from the word liber, means free. Liberalism का मतलब क्या होगा तो फिर freedom. What is stated in different aspects? Let's see. It's stated in 3 aspects: socially, politically, and economically. Let's see in 3. Socially, it emphasizes the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. ये सब मत आप माइंड में रखिएगा, बस इतना रखिएगा. सोशली लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम, मतलब पीपल को ये होता है कि गवर्नमेंट वोट द्वारा, कंसेंट मतलब वोट, वोट द्वारा चुना जाए. ये है कॉन्सेप्ट लिबरलिज्म सोशली. मतलब अब पॉलिटिकली लिबरलिज्म मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ. हम सोचते हैं कि फ्रांस के पीपल तो सारे इक्वल होने के लिए, मतलब वैसे कॉमननेस लाने के लिए ऐसे सोचते हैं. इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी नहीं, यहाँ पर एक माइनॉरिटी है फ्रांस की, मतलब एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं हम. एक पॉलिटिकली वो सारे लोगों को इक्वल नहीं मानते हैं, बस जिन्हें के पास पीपल, मेन, पीपल यहाँ का मतलब वुमेन नहीं आएंगे, सिर्फ मेन. The men with property are given the rights to vote and others were not. Others मतलब यहाँ पर men without property and also women. ये है politically. Suffrage means right to vote. Okay. Now economically liberalism stood for the freedom of markets. अब आप लोग सोचेंगे कि freedom of markets मतलब सारे जो भी goods है, जो भी goods है वो सारे फ्री भी ही मिल जाए, ऐसा नहीं है. मतलब freedom of markets में ये नहीं है. Abolition of state imposed restrictions. State imposed restrictions means क्या होता है सोचिए. Yes, correct answer. It is tax. Taxes को कम कर दिया जाए, ये है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स. अगर सारे फ्री दे देंगे तो ट्रेडर्स क्या करेंगे, है ना.
तो ये इकोनॉमिकली फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मिले, मतलब टैक्स कम कर दिया जाए, बस ये है। और नेपोलियन ने ज़ोल्वेरिन एक 1834 में ज़ोल्वेरिन का एक किया था। ये फॉर्म हुआ था इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया and these were joined by the most of the German states. The union abolished tariff barriers, मतलब जो भी ट्रेडर्स है उनको अबॉलिश कर दिया, और रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 नहीं 32 टू 2। मैंने अभी बोला था ना, यही है, इसका नाम है जोलबेरी। ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके बच्चा पार्टी, सो दिस इज योर end of the chapter. So thank you. In this is the not end of the chapter, but this is the first part. Okay. Now we will meet at you second part, which will be just uploaded very soon. So I'm giving you the homework. Yes, homework. Hmm, homework. What should I do? Yeah, homework में आपको व्हाट इज लिबरलिज्म, यही आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट डे है तो इसलिए कुछ नहीं होमवर्क दे रही, बस यही क्वेश्चन को आप बिना देखे पूरा पढ़ने के बाद, ये पूरा वीडियो देखने के बाद, कंसंट्रेशन के बाद, ये इतना तक पार्ट तो आपको क्लियर ही हो जाएगा 99%। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी का है, बाहर की एडिशनल नहीं है, फुल एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी। मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि यहाँ पर 1848 में 3 चीजें हुई थी। ये जो 1848 ईयर है, 3 चीजें। पहला तो ये प्रिंट बना था, दूसरा था सिलेशियन रिवॉल्ट, और तीसरा है रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ठीक है, ये तीनों हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स, वेट फॉर द सेकेंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।